प्लीज नोट, जब आप इस लैंडस्केप में गाड़ियाँ चलाते हैं, ह्यूमंस को लेके फिरते हैं, गेम खेलना शुरू करते हैं, तो आप यू रियली डोंट वांट कि लोग इसकी लिमिट से बाहर निकल जाएं। तो एक बड़ी कॉमन सी चीज़ जो लोग करते हैं, जो गेम डेवलपर्स करते हैं, वो ये है कि इस टेरेन के एजेस पे, बिल्कुल किनारों पे, एक हाई ओपेसिटी के साथ आप इसको रेज कर देते हैं ग्राउंड को। सो ग्राउंड को रेज करने से क्या होता है कि आपका टेरेन जो है वो ऐसा लगता है कि बहुत ही ऊंची किस्म की कोई दीवार यहाँ पे खड़ी हो गई है, और वो ऊंची दीवार इतनी ऊंची होती है कि किसी गाड़ी से या किसी बंदे से इस पहाड़ी पे चढ़ना मुमकिन नहीं होता। और जब आप गेम के अंदर होते हैं तो आपको लिटरली ऐसा लगता है कि दूर कोई हैवी माउंटेन रेंज है जिस पे जाना मना है। सो आमतौर पे in some games what I do is I just simply go to the edge somewhere over here and apply the height tool in such a way कि आपकी जो पूरा एज है वो एक माउंटेन रेंज बन जाता है। दिस लुक्स वियर्ड, लेकिन बाद में उसको आप थोड़ा सा स्मूथ कर सकते हैं। It's getting too big, huh? I'll do something like that. No. Yeah, you just get hold of the tool and try to be as precise as possible कि आपकी ज़मीन की जगह भी ज़ाया ना हो और ये माउंटेन रेंज भी बन जाए। ऑब्वियसली बहुत हाई चला गया, इसको हम अभी मज़ीद बेहतर करते हैं यूजिंग द स्मूथ टूल मे बी। Yeah, so I can use the smooth height tool, especially on these pointed mountains. You see, this gets a little more natural. Similarly, this weird range also becomes more natural if you use the smoothing tool on this. Yeah, you can try to lower that too high of a mountain here to something a little lower. Looks too big. So once you run the game, you will see that along with the mountains, in the distance there are huge mountains nobody can climb, and nobody knows that after these mountains there is actually nothing, और ये हमारा terrain वहाँ पे ख़त्म हो रहा है। Similarly, if I go to the camera and start flying around, now you can see कि हमारी टेरेन के किनारों पे चारों तरफ जहाँ भी हम जाएं वहाँ पे एक ऊंची सी माउंटेन रेंज है, जिस माउंटेन रेंज पे चढ़ना किसी गाड़ी की बस की बात नहीं है। यहाँ तक कि हम जो फ्लाइंग मशीन्स यूज़ करेंगे, हेलीकॉप्टर्स एंड जहाज़, उनको भी कोशिश करेंगे कि इनकी हाइट से ऊपर वो जा ही ना पाएँ। उनकी लिमिट रीच हो जाए तो इवेंचुअली दे विल नॉट बी एबल टू गो बियॉन्ड दैट। सो ये है तरीका हमारी माउंटेन रेंज को सेट करने का और ज़मीन की हाइट को लोअर और हायर करने का, एंड दिस helps you make some realistic terrains in your game.